Hello, beta. Good evening, everyone. So, beta, we are beginning in today's lecture statistics. Okay. The reference book that I will be using for statistics, it is going to be Devore. ठीक है, आप कोई भी एडिशन डिवोर का यूज कर सकते हो. You can use the 8th edition or the 9th edition. There is not much difference in the edition of the book that you will be using. ठीक है. ठीक है बेटा. So let's start with section number 1.1 which talks about population, processes and sample. ठीक है. इससे पहले बेटा हम थोड़ा सा एक डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं. So let's try to understand what is statistics. What is statistics? बेटा statistics का जो मेन डेफिनेशन है, it is the science of collecting, analyzing, interpreting and processing data. साइंस ऑफ फोर थिंग्स. पहले हमने क्या किया, हमने डेटा को कलेक्ट किया. आई विल कलेक्ट डेटा. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, इफ आई वॉन्ट टू चेक दैट व्हाट इज द वॉचिंग पैटर्न ऑफ पीपल, व्हाट डू दे वॉच, है ना, क्या वो नेटफ्लिक्स देखते हैं, क्या वो अमेजोन देखते हैं और उस पर क्या देखते हैं. सो फर्स्ट आई विल नीड दैट डेटा ऑफ पीपल. पहले मुझे उस डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा. सो द स्टेप वन इज टू कलेक्ट डेटा. सबसे पहले हमें लोगों के डेटा को कलेक्ट करना होगा. वी विल हैव टू गो अहेड एंड वी विल हैव टू कलेक्ट द डेटा. बेटा स्टेप टू विल बी एनालाइजिंग दैट डेटा. ठीक है, ये डेटा तो मेरे को मिल गया, बट अब इस डेटा को मुझे एनालाइज भी करना है ना. आई नीड टू प्रोसेस दिस डेटा, आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस डेटा कि व्हाट दिस डेटा इज टॉकिंग अबाउट. राइट, प्रोसेसिंग कम्स फर्स्ट बेटा. एनालाइजिंग से पहले आई विल डू प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा. So I will do processing of the data set, right? By processing of data set, what do we mean? By processing of data set means हमने उसका जो भी outliers है, we will remove the outliers, we will make the data better, right? Then we will analyze the data better. ठीक है. After analyzing the data, we will go ahead and we will interpret the data. कि ठीक है, मैंने analyze कर लिया and I found out that 50% of the people, they go ahead and they watch comedy genre. 30% of the people watch suspense movies. ऐसे करके हमने इसका पूरा एनालाइज करके डेटा को निकाल लिया एंड देन वी विल इंटरप्रेट दिस कि व्हाट दिस मींस, व्हाट पीपल लाइक, है ना. वी विल इंटरप्रेट द डेटा एंड आफ्टर इंटरप्रेटिंग द डेटा वी विल गो अहेड एंड वी विल प्रेजेंट द डेटा. प्रेजेंटिंग द डेटा, उसके बाद उसी डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे, है ना. कि प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं. वी कैन प्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम. We can present this in the form of, suppose, a bar chart, a pie chart. कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं. सो वी विल गो अहेड एंड वी विल प्रेजेंट द डेटा सेट. सो व्हेन वी गो अहेड एंड व्हेन वी डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स बेटा, देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, राइट. सो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली गोज अहेड एंड इट मीन्स द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग, इंटरप्रेटिंग द डेटा सेट. इसको हमने स्टैटिस्टिक्स बोल दिया. Now in statistics there are two main things of interest. दो मेन चीजें आती हैं हमारी इंटरेस्ट की. The first is called as population, right? And the second beta is called as a sample. Population sample. ठीक. Population का क्या मतलब है? Population means entire set of individuals. It means entire set of individuals or objects of interest. So if I take all set of my individuals, अगर मैंने सारे individuals ले लिए, so what I will be getting will be called as a population. A sample is basically subset of a population. एक example दूंगी, that will make things easier, don't worry.
a subset of population. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. So for example, I go ahead and I tell you कि I have a country A and इस country A में there are 1 lakh people, है ना बेटा? In country A there are 1 lakh people. So this beta, this is basically called as the population. अब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद दीज 1 लाख पीपल. ये सारे 1 लाख लोगों के साथ मेरे साथ काम नहीं होता. सो आई पिक अप अ स्मॉल सबसेट. I make a group of 1,000 people and I collect data from this 1,000 people. मैं सिर्फ 1,000 लोगों के साथ काम करके उन्हीं का डेटा ले रही हूँ. Then these 1,000 people बेटा, that becomes your sample. इसको हम sample बोल देते हैं. So population basically is the entire set. सारे लोग अगर हम मिला दें तो population. And when we pick up a particular set, subset, उसमें से हमने कुछ लोगों को निकाला, तो what I get is called as a sample. ठीक है? तो बेटा, this is the first part of this book which talks about population, sample and processes. पढ़ते हैं थोड़ा सा. Let's read this down. So read it with me. An investigation will typically focus on well-defined collection of objects constituting a population of interest. माने if we take all people together, अगर हमने सारे लोग एक साथ ले लिए, then what I get is called as a population. है ना? Then what I get is a population. अब देखो बेटा, यहां से ये क्या बोल रहे हैं? Another investigation might involve population consisting of all individuals who receive engineering degree. When desired information is available from population, it is called as census. तो बेटा, हमें पता है कि we conduct census in India. तो जब हम सेंसस कंडक्ट करते हैं इंडिया में, हम हर इंडिविजुअल से उसका डेटा मानते हैं. माने हम पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. So what is a census? Census is when you have your information available for objects from the population. आपने पूरी इंडिया के हर इंडिविजुअल से जाकर आपने पूछा कि उनका इनकम कितना है ना? आपने उनसे उनका एज पूछा, जो भी रिलीजन पूछा, रीजन पूछा. यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ इंडिया. दैट मीन्स यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन, है ना बेटा? तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेंसस. तो व्हेन यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन, जब आप सारा का सारा पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, दैट is what is called as a census. उसी को हम census बोल देते हैं. ठीक है? Now, beta, what we are saying is that sometimes it is very difficult to work with population. इस population के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. It is very difficult to work with population. इसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं. The first reason can be time crunch. आपके पास टाइम ही नहीं है इतना. The second is that it is very costly एंड इनइफेक्टिव. बहुत महंगा पड़ेगा हर एक इंसान से जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. सो व्हेन यू हैव दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विद यू, लाइक टाइम क्रंच, लाइक यू डोंट हैव सो मच मनी, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपके पास सपोज इतने रिसोर्सेज ही नहीं है ना? अब अगर पूरी इंडिया से डेटा कलेक्ट करना है, सो यू नीड मेनी इन्वेस्टिगेटर्स, यू नीड मेनी पीपल टू गो अराउंड एंड कलेक्ट द डेटा. So when that is missing, जब इनमें से कुछ भी एक होता है, so what we work with is called as a sample. हम किसके साथ काम करते हैं बेटा? सैंपल के साथ. What is a sample? A sample is a subset of a population. जब हम एक population का एक subset लेते हैं, when we take some part of the population, तो उसी को हम sample बोल देते हैं. That is what is called as a sample. ठीक है बेटा? Just take this example here. तो अब हम बोल रहे हैं, नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेरिएबल. ठीक है? वेरिएबल इज एनीथिंग whose value changes from one object to another. Variable is anything whose value changes from one object to another. जैसे for example, if I define x as a variable and I am saying this is the height
ऑफ अ स्टूडेंट। तो बेटा हाइट ऑफ स्टूडेंट विल चेंज फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर। एक स्टूडेंट से जब हम दूसरे स्टूडेंट पे जाएंगे तो हाइट विल डिफर। So x can be defined as a variable. Variable means it can vary. Variable means it can vary. And can vary का मतलब क्या हो गया कि its value can change from one individual to another. Variables are usually denoted by lower case. जब भी हम variables को denote करते हैं तो उसको हम lower case से denote करते हैं। For example, बेटा small x can represent brand of calculator owned by the student. अब ये brand कुछ भी हो सकता है, it can be brand A, brand B, brand C, so the value can differ. ठीक है। Then बेटा next is saying y can represent number of visits to a particular website. अब वो number of visits differ कर सकती है, it can be 1, it can be 10, it can be 10,000. Z represents braking distance of an automobile under specified condition. तो ये सारे वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनका वैल्यू चेंज होता रहेगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। द वैल्यू विल डिफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें यूनिवेरिएट डेटा सेट का, यूनिवेरिएट डेटा सेट हैव ओनली वन वेरिएबल। अगर हम एक ऐसा डेटा का बात कर रहे हैं जिसमें एक ही वेरिएबल है, यूनी means one, variate means variable, means variable। तो अगर हम एक ऐसा डेटा सेट का बात करें जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, if there is only one variable in the data set, then it is called as a univariate data set। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक डेटा सेट लिया of the brand purchased by 10 individuals, कार ब्रांड परचेस्ड बाय 10 इंडिविजुअल, माने हम देख रहे हैं कि कौन सा कार 10 लोगों ने खरीदा है। सो सपोज इंडिविजुअल ए हैज परचेस्ड मारुति, बी हैज परचेस्ड बीएमडब्ल्यू, सी हैज परचेस्ड इकोस्पोर्ट, डी हैज परचेस्ड स्विफ्ट, ऐसे करके हमने अलग अलग लिख दिया। सो वी आर कंसिडरिंग ओनली वन वेरिएबल। व्हाट इज द वेरिएबल? द कार। और ये मेरा डेटा बन गया, दिस इज माई डेटा विच कंसिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द कार। सो इफ आई एम वर्किंग विद ओनली वन वेरिएबल, अगर मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ बात कर रही हूं, देन दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिवेरिएट डेटा सेट। ठीक है। सिमिलरली बेटा सेकेंड एग्जाम्पल देखो, लाइफ टाइम ब्रांड बैटरीज। तो अगर हमने यहां पर क्या लिखा है कि हमारी बैटरी की कितनी लाइफ रही इन टर्म्स ऑफ से ईयर या आवर्स या जो भी। सो आई एम जस्ट वर्किंग विद वन डेटा सेट, एक ही डेटा सेट के साथ हम काम करें, एक ही वेरिएबल के साथ काम करें, then it is called as a univariate data set. So what is a univariate data set? If you go ahead and if you work with only one data, right, then that is called as a univariate data set. Okay beta, next let's talk about a bivariate data set. So bivariate, beta bi means two, variate means variable, बाई मीन्स टू, वेरिएट मीन्स वेरिएबल। तो एक बाई वेरिएट डेटा सेट वो डेटा सेट हो गया इन विच वी हैव टू वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ फॉर अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ, आई फाइंड आउट व्हाट इज देयर हाइट एंड वेट। तो माने आई एम वर्किंग विथ टू वेरिएबल्स, हर बच्चे के लिए मुझे दो वैल्यूज चाहिए, हाइट भी और वेट भी, हाइट भी और वेट भी। सो आई एम वर्किंग विथ टू वेरिएबल्स। So when you work with more than one variable, when you work with two variables, it is called as bivariate data set. But the third one that we have is called as a multivariate data set. अब multivariate data set क्या हो गया? Multiple variables हैं, तो हमने height weight तो जाना ही, but we also get to understand what is the marks obtained by student in class 10th. ठीक है। देन वी ऑल्सो गेट टू नो कि व्हाट इज द इनकम, फैमिली इनकम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है। तो बेटा व्हेन वी पिक अप मल्टीपल वेरिएबल्स, हम अपने डेटा में बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ अगर काम कर रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू अलग अलग लोगों में चेंज होगा।
We are looking at the weight of students, we are looking at the marks obtained by students and family income of students, then we can go ahead and we can call this as a multivariate data set. इसको हम एक multivariate data set बोल सकते हैं, right? Okay. Now let us go ahead and let us talk about the branches of statistics. ठीक है, तो बेटा there are two branches of statistics that we have. The first is called as descriptive statistics. ठीक है, the first one it is called as descriptive statistics. ठीक है, and beta the second one that is known as inferential statistics. बेटा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या करता है? इट इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ सैंपल टू बेटर अंडरस्टैंड इट. It is ways of describing properties of a sample to better understand it. माने अगर एक सैंपल को हम किसी तरीके से डिस्क्राइब करें कि उस सैंपल का एवरेज क्या था, उस सैंपल का मीडियन क्या था, मोड क्या था, वेरिएशन क्या था, whatever. If we try to go ahead and if we try to explain the properties of a sample, then it is called as descriptive statistics. ठीक है बेटा, inferential statistics माने we are inferring something. We are inferring something. Inferring means हम कुछ deduce कर रहे हैं. We are trying to interpret something, right? So when we try to understand sample की basis पे, sample की properties के basis पे कि population कैसा रहा होगा, सैंपल की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम ये समझने की कोशिश करें कि पॉपुलेशन कैसा रहा होगा. व्हेन वी ट्राई टू डिड्यूस, इन्फर इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन द सैंपल, देन इट इज कॉल्ड एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. उसको हम इन्फरेंश स्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं, राइट? ठीक है बेटा, लुक एट द डेफिनेशन. An investigator who has collected data may wish to simply summarize and describe important features of the data. तो जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है हम उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को बताना चाहते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टीज को बताना चाहते हैं कि इसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है. वी वांट टू डिस्क्राइब द डेटा सेट बेटर, वी वांट टू समराइज द डेटा सेट बेटर. तो जब हम ऐसा करना चाहते हैं देन दैट बेटा इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. उसी को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं. ठीक है, वी कैन डू इट यूजिंग वेरियस मेथड्स. हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम इसको न्यूमेरिकल मेथड से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट? सो वी कैन डिस्क्राइब दिस यूजिंग स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट एक्सेट्रा, हिस्टोग्राम मतलब डायग्रामेटिकली, या हम इसको कुछ न्यूमेरिकल समरी मेजर से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं लाइक मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट एक्सेट्रा. सो दोनों ही तरीके से हम अपने डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ठीक है बेटा, टेक दिस एग्जांपल. तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? वी आर गिवन expenditure as a percentage of fundraising expenses as a percentage of total expenditure in a charity. हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हमने कितना खर्चा किया है परसेंटेज टर्म्स में 60 चैरिटीज का. ठीक है बेटा, हमारा जो पॉपुलेशन है वो 5500 का है. तो हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा था. पॉपुलेशन कंसिस्टेड ऑफ 5500 पीपल, बट जो हमारा सैंपल है वो सिर्फ 60% 60 लोगों का हमने सैंपल कलेक्ट किया. नाउ
इस डेटा को, जो भी हमें यहाँ डेटा दिया हुआ है, हम इसको बहुत अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. वी कैन डिस्क्राइब इट इन वेरियस वेज. वी कैन मेक हिस्टोग्राम. हम इसका एक हिस्टोग्राम बना सकते हैं. कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता दूंगी अभी. वी लर्न दिस. वी कैन मेक स्टेम एंड लीफ. हाउ वी डू दिस आई विल टीच यू दैट ऑल्सो. ठीक है. और वी कैन गो ahead and we can find out its mean, median, mode, standard deviation, etc. So when we go ahead and when we try to describe this data set, किसी भी तरीके से करो, you can make a histogram. आपने एक ऐसा बता दिया है हिस्टोग्राम कि देखो, जो हमारा फंड रेजिंग एक्सपेंडिचर है, इतना खर्चा हुआ है, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ हुआ, मतलब ज्यादा बारी देखा गया कि खर्चा कम रहा है, और कम बारी देखा गया कि खर्चा ज्यादा हुआ है ना. सो दिस इज बेसिकली, यू कैन कंसिडर दिस एज एन एक्सपेंडिचर. सो एक्सपेंडिचर 0 to 10% हैज हाई फ्रीक्वेंसी, है ना. और ये एक्सपेंडिचर 80 to 90% हैज लो फ्रीक्वेंसी, है ना. तो बेसिकली वी आर गिविंग फ्रीक्वेंसी विद फंड रेजिंग. हमने इसको एक डिपिक्शन दे दिया है. दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव मेथड. डोंट वरी, ये कैसे बनाते हैं आई विल टीच यू. जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डिस्क्रिप्टिव मेथड. किसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड बेटा हियर इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. पढ़ो यहां पे. Technique for generalizing from sample to population are gathered within the branch of inferential statistics. क्या कह रही है? आपके पास एक सैंपल है. इस सैंपल से आप बड़ी पॉपुलेशन के बारे में कुछ कुछ डिड्यूस कर रहे हो, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो. जैसे बेटा मेरे पास एक क्लास है. आई हैव अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स. ठीक है. ये क्लास ए है. यहां पे मेरे पास एक और क्लास है, क्लास बी. इसमें भी 100 स्टूडेंट्स है. अब क्लास ए से मैंने 20 स्टूडेंट्स उठाए, कोई रैंडमली. हाँ. और ये क्लास ए का सैंपल हो गया. सिमिलरली फ्रॉम क्लास बी आई पिक अप 20 स्टूडेंट्स and this becomes the sample of these 20 students of class B. Now beta I conduct a quiz. मैं एक quiz कर रही हूँ for these 20 students and I check which class has performed better from the sample. तो मेरे को दिखा कि इस quiz में 20 students of class A have performed better than 20 students of class B. ये जो 20 बच्चे हैं क्लास A के, इन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और इन बच्चों ने थोड़ा कम अच्छा परफॉर्म किया है. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए हैव परफॉर्म्ड बेटर देन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बी इस सैंपल में, इन द सैंपल. ठीक है. तो बेटा नाउ व्हाट आई विल थिंक अबाउट द क्लास इन जनरल, कि ठीक है, क्लास ए इज मोर इंटेलिजेंट देन क्लास बी. क्लास ए इज मोर इंटेलिजेंट देन क्लास बी based on sample. I am inferring about the entire population. सैंपल के बेसिस पे मैं पॉपुलेशन के बारे में कुछ बता पा रही हूं. वी आर इन्फरिंग अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल. तो व्हाट विल वी कॉल दिस? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. दिस कैन बी कॉल्ड एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. ओके बेटा. नाउ फॉर दिस इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बच्चे, with time you will understand, we do various things. We do something which is called as hypothesis testing. Time के साथ समझ में आएगा. हाँ. These are the upcoming chapters. We do something which is known as confidence interval. ठीक है. We do something which is known as prediction bound. We do various things beta, right? So these things that we do, that is basically called as inferential statistics. Is this clear beta? I hope all of you this is clear to you. ठीक है. तो यहां पे ना यही किया हुआ है. This example talks about that only.
This is the data given to you. इस डेटा का हम बहुत कुछ निकाल रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, लोअर प्रिडिक्शन बाउंड, अपर प्रिडिक्शन बाउंड, बट दिस इज नॉट टू बी डन नाउ. क्योंकि जब तक हम ये चैप्टर्स ना कर लें तब तक हमें कैसे समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाउ विल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रिडिक्शन बाउंड. वी कैन नॉट अंडरस्टैंड ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दीज चैप्टर्स. दीज आर सेपरेट चैप्टर्स in this book. Then this example will be cakewalk, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, but not now. ठीक है. देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है that hypothesis testing, point estimation, etc. they are chapter 6 to 8 of this book. ठीक है. तो अभी हमें इनको नहीं समझना है. We don't have to do them now in this first chapter. Okay बेटा, now let's continue forward. So now this is the diagram which is important अभी के लिए inferential statistics के लिए. अब थोड़ा सा समझ लेते हैं what this diagram is saying. देखो, it is saying population, probability, sample. Inference, population. थोड़ा समझो. I have a population in hand. Suppose I have 1,000 people. I need to collect a sample of 100 people. मुझे सिर्फ 100 लोगों का sample चाहिए. So what will I do, beta? Each individual will have equal chance of getting selected. हर इंडिविजुअल का सेलेक्ट होने का चांस इक्वल है. बेटा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? हाउ डू वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू गो अहेड एंड इट इज गोइंग टू हेल्प अस गेट टू अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन. माने 1000 लोग हैं तो हर एक को सेलेक्ट करने का चांस 1/1000 है. If there are 1,000 people, each individual has a chance of 1/100 of getting selected. ठीक है. So this is the chance of getting selected. ठीक है. So probability is helping to understand likelihood of getting selected. Select होने का क्या likelihood है, कि किस चांस के साथ आप सेलेक्ट हो सकते हो, वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है. राइट. एंड दैट इज हेल्पिंग यू डिटरमाइन योर सैंपल. उससे आप एक सैंपल की तरफ आ रहे हो. एंड वंस यू हैव गॉट द सैंपल, जैसे अभी हमने वो क्लास का एग्जांपल लिया, हमने क्लास ए के कुछ बच्चे लिए और बी के, और फिर हमने देखा कि कौन बेटर है उस सैंपल में. सो वंस यू हैव गॉट द सैंपल, यू कैन इन्फर इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन. यू कैन एक्सप्लेन द पॉपुलेशन. आप पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हो. Right? So this is the diagram that is explaining this thing. The relationship between probability and inferential statistics. ठीक है. Okay बेटा, example number 1.3. देखो यहाँ पे, this example is also going ahead and talking about that only. अब यहाँ पे देखो कुछ important lines पढ़ो. How likely is it that sample of 100 driver will include at least 70 who regularly use their lap belt? How many drivers in a sample of size 100 can we expect to regularly use their lap belt? This is all probability. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने वापस इस एग्जाम्पल पे आ जाऊं, अब मैंने ये 20 स्टूडेंट्स यहां सेलेक्ट किए और 20 यहां, हर एक का इक्वल चांस था सेलेक्ट होने का. तो ऐसा है ना कि ये जो 20 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, शायद ऐसा हुआ हो कि सारे इंटेलिजेंट बच्चे सेलेक्ट हो गए हो जिनका 90 अबव मार्क्स आता हो, और यहाँ पे वो बच्चे सेलेक्ट हो गए हो जिनका 60 या बिलो आता हो. सबकी इक्वल चांस है ना सेलेक्ट होने का, तो कोई भी सेलेक्ट हो सकता है. सो प्रोबेबिलिटी विल हेल्प मी अंडरस्टैंड द चांसेस of selecting students who have secured above 90 in the sample, या selecting students who have secured below 60 in the sample. तो जो sample बन रहा है वो कैसा बनेगा? It will be based on probability, right? So basically the questions like this, how likely
कितना लाइकली है कुछ होना, हाउ मेनी पीपल विल हैव मोर देन 90 मार्क्स इन द सैंपल, वो सारे आंसर्स प्रोबेबिलिटी दे पाता है. इट इज एबल टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दोज क्वेश्चंस. ठीक है. द स्कोप ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. तो बेटा दीज आर सम प्लेसेस जहां पे हम स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, दिस दैट, पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा. आई एम लीविंग दिस टू यू. यू कैन रीड दिस ऑन योर ओन. ठीक है. ठीक है. Now, let's come to an important point. Enumerative versus analytic studies. Enumerative versus analytic studies. ठीक है बेटा. आई एम नॉट श्योर अगर आपने कभी अपने बेसिक इफ यू हैव हर्ड ऑफ द वर्ड इन्यूमरेटिव इन इन इंग्लिश एज अ होल. हाँ, अगर आपको उसका थोड़ा मतलब पता हो, बट लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस. Enumerative basically is one in which the objective is to describe population at any particular point of time. लिख लेते हैं एक बार. It is the one in which enumerative objective is to describe population at a particular point in time. At a particular point in time. ठीक है. तो जब हम पॉपुलेशन को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे समझना चाहते हैं, ठीक है, तब हम उसको इन्यूमरेटिव स्टैटिस्टिक बोलते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इन्यूमरेटिव स्टैटिस्टिक. जैसे फॉर एग्जांपल, वी वांट टू नो, एक कंपनी है, कंपनी ए, एंड इट वांट्स टू नो द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स in sample of 200 shipments out of 10,000 shipments. Out of 10,000 shipments. तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? We are finding out at a point of time कि इस टाइम पे कितनी shipments हैं जो defective है, कितने products हैं जो defective है, right? So when we go ahead and when we do things like that, that is called as enumerative statistic. But on the other hand, an analytic study, it is concerned with understanding basically the behavior or process over time. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो समझ में आ गया, इन्यूमरेटिव ने ये तो बता दिया कि देखो ये जो 200 का सैंपल था ना, इसमें से 10 डिफेक्टिव निकले, आउट ऑफ 200 10 आर डिफेक्टिव. ठीक है, समझ में आ गया. बट एनालिटिक क्या करेगा? एनालिटिक इससे ज्यादा आगे बढ़ेगा. इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ डिफेक्ट्स. ठीक है. इट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पास्ट में कितने डिफेक्ट्स रहे हैं. इट विल कंपेयर इट विद द करेंट डिफेक्ट्स, है ना. इट विल ट्राई टू रिड्यूस द डिफेक्ट्स इन फ्यूचर प्रोडक्शन. कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं वो बताएगा. माने वी विल डू अ कंप्लीट एनालिसिस, है ना. सो एनालिटिक इज टू डू अ बेटर थिंग कि आप उसका रूट कॉज भी जानो कि डिफेक्ट्स क्यों हो रहे हैं. यू वांट टू रिड्यूस द डिफेक्ट्स इन द फ्यूचर. ठीक है. यू वांट टू चेंज द एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग आउट द डिफेक्ट्स. किसी और तरीके से निकाल के देखने की कोशिश करो कि अब डिफेक्ट्स कितने आते हैं. सो इट्स ब्रॉडर प्रोसेस. वेयर एज इन्यूमरेटिव इट इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि हमने बस बता दिया कि डिफेक्ट्स कितने, राइट. सो read it out. In the former, interest is focused on finite, identifiable, unchanging collection of individuals that make up a population. हमने सिर्फ ये बता दिया कि reason क्या, मतलब कि what is the number of defects, that's it. But in analytic, we will also go ahead and we will also find out the reason कि क्यों defect हुआ होगा, what would have been the defect. So read it out. Analytic में पढ़ो.
Such studies are often carried out with the objective of improving future project by taking action, है ना? तो हमने सिर्फ ये नहीं निकाला कि कितने डिफेक्ट्स हैं. We also find out what is the root cause of defect, why past defects have happened, how we can reduce the defects in the future. जब हम सब कुछ निकालते हैं, then that is called as an analytic study. That is called as an analytic study. I hope this is clear to everyone. ठीक है? Okay, beta. Now let's talk about collecting the data. When we talk about collecting the data, तो data collection के लिए we talk about sampling methods. But before I go to sampling methods, I want to do something very important today. I want to talk about the two type of variables. Variables can be of two type, beta. एक हो जाते हैं quantitative और एक हो जाते हैं qualitative. Quantitative variable क्या variable हो गया? For example, anything which is number related. और qualitative data क्या data हो गया बेटा? Anything जैसे for example we were collecting the brand name of the car owned by individual, है ना? तो ये qualitative हो गया. या the grades obtained by student, grade A, grade B, grade C, that is a qualitative data set. Quantitative data set is when we have numbers. Now the quantitative data set can be of two types. First can be discrete, second can be continuous. Discrete data set is when you have something which is in terms of countable number, ठीक है? बट उसको हम सिर्फ नंबर्स में बता सकते हैं, 1 या 2 या 3 या 4. जैसे नंबर ऑफ कॉल्स यू मेक इन 1 hour. तो या तो आप एक कॉल करोगे या दो. 1.2 कॉल्स तो नहीं कर सकते, 1.5 तो नहीं कर सकते हो. सो इट कैन नॉट बी इन डेसिमल, राइट? इट कैन नॉट बी इन इंटरवल. It has to be fixed number in a sequence. ठीक है? But continuous data set हो गया which can have decimal values also, which can be in intervals also. ठीक है? जैसे height of a person, it can be in decimal also, 5.1 something, and it can be in decimals also. So continuous data set is something which can be in decimal, which consists of an interval. But discrete data set is something which can only be in numbers. ठीक है? So this is about the type of data that we have. ठीक है? अब बेटा once we have seen the type of data, तो अब the next thing that we want to understand is how to go from population to a sample. अब ये तो हमें पता है कि पॉपुलेशन सपोज 1000 लोगों का है, so I need a sample of 100 people. That is clear to me. But how to collect this data of 100 people? ये 100 लोगों का हम डेटा कैसे कलेक्ट करें? Then that is something which I can do using the various sampling techniques. We can collect this data using the various sampling techniques. ठीक है बेटा? And that is what I am going to go ahead and I am going to take in the next lecture, where we will discuss the various sampling techniques involved in statistics. Okay beta, thank you.